श्री श्री गीता महात्म। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धर्मवाच्य भगवान परमेशान भक्तिरव्यभिचारिणी प्रारब्धं भुज्यमानस्य कथं भवति हे प्रभो। श्री विष्णुवाच प्रारब्धं भुज्यमानो हि गीताभ्यासो रतः सदा सा मुक्त सुखी लोके कर्मणा नोपलिप्यते महापापाति पापानि गीताध्यानं करोति चेत् क्वचित् स्पर्शं न कुर्वन्ति नलिनी दलमम्बुवत्। गीताया पुस्तकं यत्र यत्र पाठो प्रवर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादि तत्र वै। सर्वे देवाश्च ऋषयो योगिनो पन्नगाश्च वै। गोपाला गोपिका वापि नारदोद्धव पार्षदे। सहायो या जायते शीघ्रं यत्र गीता प्रवर्तते यत्र गीता विचारश्च पाठनं पाठनं श्रुतं तत्राहं निश्चितं पृथ्वी निवसामि सदैव हि। गीताश्रये अहं तिष्ठामि गीता मे चोत्तमं गृहं। गीता ज्ञानमुपाश्रित्य त्रीन् लोकान् पलयाम्यहम्। गीता मे परमा विद्या ब्रह्मरूपा न संशयो अर्धमात्राक्षरा नित्या सा निर्वाच्या पदात्मिका। चिदानन्देन कृष्णेन प्रोक्ता सम्मुखत अर्जुनं वेदत्रयी परानन्दा तत्तार्थ ज्ञान संयुता। यो अष्टादश जपेन् नित्यं नरो निश्चल मानस ज्ञान सिद्धिं स लभते ततो याति परं पदम्। पाठे असमर्थ संपूर्णे ततो अर्धं पाठमाचरेत् तदा गोदानजं पुण्यं लभते नात्र संशयो। त्रिभागं पठमानस्तु गंगा स्नानो फलं लभेत्। षड्दशं जपमानस्तु सोमयागो फलं लभेत्। एकाध्यायं तु यो नित्यं पठते भक्ति संयुत रुद्रलोकम् अवाप्नोति गणो भूत्वा वसेत् चिरम्। अध्यायं श्लोकपादं वा नित्यं या पठते नरः सा जाति नरकं यावन् मन्वन्तरं वसुन्धरे। गीताया श्लोकदशकं सप्तपञ्चचतुष्टयं द्वौचनेकं तदर्धं वा श्लोकानां या पठेन्नरो चन्द्रलोकम् अवाप्नोति वर्षाणाम् अजुतं ध्रुवम्। गीतापाठ समायुक्तो धृतो मनुष्यतां व्रजेत्। गीताभ्यासं पुनः कृत्वा लभते मुक्तिमुत्तमाम्। गीता इत्युच्चारु संयुक्तो नियोमानो गतिं लभेत्। गीतार्थो सोनासक्तो महापाप अयुतोऽपि वा वैकुण्ठं समुपप्नात् अप्नोति विष्णुना सह मोदते। गीतार्थं ध्येते नित्यं कृत्वा कर्मणि भूरिश जीवन्मुक्तो सविज्ञेय देहान्ते परमं पदम्। गीतामाश्रित्य बहवो भुजो जनकादयो निर्धूतकल्मषालोके गीतायाता परं पदम्। गीताया पठनं कृत्वा माहात्म्यं नैव यः पठेत् वृथा पाठो भवेत् तस्य श्रमो एव हि उदारितः। एतन् महात्म्य संयुक्तं गीताभ्यासं करोति यः स तत्फलमवाप्नोति दुर्लभां गतिमाप्नुयात्। सुत उवाच माहात्म्यम् एतद् गीताया मया प्रोक्तं सनातनं। गीतान्ते च पठेद् यस्तु यदुक्तं तत्फलं लभेत्। इति श्री वराह पुराणोक्तं श्री श्री गीता महात्म्यं समाप्तम्। ओम जदक्षरं परिभ्रष्टं मात्राहीनं च यद् भवेत् पूर्णं भवतु तत्सर्वं तत्प्रसादात् ईश्वरः।
ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत.